Students, I am saying good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So any questions? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो. There is no any questions. ऐसा है क्या? अरे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ना? Yes. आंसर नहीं कर रहे मतलब पढ़ाता नहीं है. अच्छा ठीक है कोई बात. No, sir. Then you are not saying no. Yes भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे. सर ठीक भी नहीं बोल रहे. So last time we had written bank account class, which is having 4-5 properties like account number, first name, last name, balance, and address. Of course, as far as the address is concerned, we had discussed about address that for a has a relationship. अगर हमें address update करना है तो we do not have to make any mechanism here in this class to update specific address one. Okay, time being, don't worry about that because later on if you are going to take an has attribute, we will go into the more details of that. So we have written an account class with 4 properties: account number, first name, last name, and balance. Of course, you can consider many more when you are really working on project. That can be your Aadhaar number, mobile number, and date of birth, and anything else which is going to be required as a part of an essential for opening bank account. Then we had created 2 objects, one object of type bank account, account 1, and we had looked for the different scenarios that when you are going to call in normal way without any problems as such, then it works fine, no problem at all. But if you are going to provide some in deposit where expected is going to be a positive amount, if you are going to pass a negative amount, see, instead of deposit it is going to withdraw amount because it is going to deduct, because plus minus is going to be minus. Same is going to happen in case of withdraw. When you want to withdraw amount is expected to be deducted, but if you pass the negative value, then it is going to be increased, not by decreasing property but increasing property. This is again which do not expected by us. Okay. Sometimes when you are going to withdraw amount, and if the amount whatever we are passing in a withdraw method is going to be greater than the balance, then we need to check for whether sufficient amount is or sufficient balance is available in account or not. If not, then we have to handle that too. Okay. So for that, what we had done is that we had written code something like this. ऐसा कुछ हमने कोड पहले लिखा था. Anybody having any ambiguity or any clarification, any doubts as far as this particular code is concerned? No, sir. Okay, feel free to ask questions. Do not hesitate. It may happen that your one question can clarify your doubt within 5 minutes. And if you are going to read the book, you may require 1 hour for that. Okay then.
Just I'm googling for exception. Of course, I'm not going to show you that. Please increase font size. So there is a concept of an exception handling. So now we are going to change the code for exception handling. For that matter, instead of changing an existing code, I will prefer to have new package exceptions dot my exceptions हमने एक पैकेज लिखा है I'm copying bank account test from our earlier package and pasting here. Closing all others. So this is my bank account class, which was earlier. This is my bank account test class, which was written as earlier. Now, come to the deposit method. If amount is less than 0, you are not expected to be handled like this, because as we discussed earlier last time, this particular mechanism of handling an exception like system.out.println is not going to be a proper way to handle it, because this will not clarify that what is exactly happened about, what happened about, and it is not going to known to the caller function. जो इस function को कॉल करता है, इस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करता है, उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ तो क्या. सो इसके लिए there is a mechanism page exception raise करने का mechanism है. Okay, I hope that Eclipse is visible to you. If not visible, bring into my notice. So for that, we have to create exception is equal to new exception, and you can pass this as a parameter to that. And then you can say throw E. Once you throw E, there is no use of these statements. If you are going to see, you are going to get error for this statement also. This says that it is an unreachable statement. अनरीचेबल कोड, क्योंकि थ्रो के बाद जो भी कोड है, जो भी लाइंस है, वो कभी एग्जीक्यूट
होगी ही नहीं. So ये unreachable statement है. There is no use of that. Delete it. Now this particular line is raising an exception. This particular line is raising an exception. You require to handle it. हैंडल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने शुरू में किया था, ट्राई और कैच, और यू रिक्वायर टू राइट हियर v डॉट पिन स्टैक ट्रेस लाइक दिस. ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा. अगेन इफ यू आर गोइंग टू हैंडल इट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो अननोन टू द कॉलर. कॉलर को थोड़ी पता चलेगा. अगर सपोज दैट मैंने आपको कुछ काम दिया, काम करते समय आपको कुछ दिक्कत आई और दिक्कत आपने मुझे बताई नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ, व्हाट इज हैपेंड विद दैट वर्क. डजंट मैटर व्हाट इज दैट वर्क. राइटिंग ए सिंपल क्लास, राइटिंग ए सिंपल प्रोग्राम, राइटिंग ए सिंपल फंक्शन with some specification, and if you are unable to complete that, I should get the acknowledgement of the same that this has happened with the task I had given to you. So this is not the way to handle exception. Obviously try and catch is the one of the best way to handle exceptions, but not at the place where exceptions are raised. But not at the place where exceptions are raised, but at the place where we are using the code which may raise an exception. But where the location where we are using this particular method was. So this is not expected to use here. So I am saying undo. मैं undo कर रहा हूँ. Okay. If I am not handling exception, I have to use throws clause. Throws exception. देखो, once I return throws exception, throw का जो error था वो चला गया. What this throws clause says, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो throw को error आता. Throw, what throw is doing? Throw is just raising an exception or throwing an exception. Throw clause करके आगे जो लिखते हैं हम वो normally exception type का ही object रहता है, and it is just raising an exception. ये सिर्फ exception raise कर रहा है, तो इसको handle करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ तो हमें हैंडल करना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि थ्रोज क्लॉज यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज थ्रोज क्लॉज एंड वी लिस्ट दैट व्हिच एक्सेप्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेज बाय डिपॉजिट मेथड. डिपॉजिट मेथड में कौन सा एक्सेप्शन रेज हो सकता है उसका लिस्टिंग देना इज कॉल्ड थ्रोज क्लॉज. तो इससे ये पता चलेगा कि ये मेथड ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू इट. But what I am going to do is that I do not want to use exception directly as it is. Okay. As we already studied inheritance. Okay. I'm stopping sharing now. I'm sharing something else to you. क्या आपको एक वेब ब्राउजर में से एक ग्रीन और रेड कलर का इमेज दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो जैसे मैंने इसके पहले बोला है कि कुछ भी आप क्लास लिखो सबके ऊपर आपका जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट रहता है. आप लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर, एक्सटेंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. देन थ्रोएबल इंटरफेस है. थ्रोएबल इज एन इंटरफेस. ओके, ये इंटरफेस is going to be implemented by two classes. One is class an error class, another class is an exception class. हम exception use कर रहे हैं. We are using an exception. Okay? जो error class में है, these are going to be an error occurred during execution of a program. These are about error occurred during execution of the program. It is not an exception. Remember, exception is we are expecting something and this is not happening. It is called exception. Error is something that we are not expecting but it happens. For example, when my session is on, internet power goes, internet connection goes due to the power failure or something like that one. This is called error. Okay, but
these errors are not expected to be handled by a Java programmer. एरर जावा प्रोग्रामर को हैंडल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या होगा कैसे होगा, तो it is not expected to handled by. Then exception comes. Exception is again having the two type of the exceptions: runtime exception, IO exception, SQL exception, or some other kind of exception. Runtime exception is the exception which is going to be called as an unchecked exception. हमने चेक्ड और अनचेक्ड की बात की थी, हमने चेक्ड और अनचेक्ड की बात की थी. फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा अनशेयर करता हूं, ओके, और मैं सीधा स्क्रीन शेयर करता हूं, सो दैट व्हेन आई एम गोइंग टू स्विच, ओके, ओके, अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम का स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. Okay. Now you are looking Eclipse. Yes, sir. Okay. Now you are looking browser. आपको अभी ब्राउजर दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा लैग होगा, हो सकता है इंटरनेट स्पीड की वजह से. दिख रहा है क्या अभी ब्राउजर का इमेज? Yes, sir. ओके. सो अगर हम यहाँ एक्सेप्शन की जगह रनटाइम एक्सेप्शन करेंगे, और अगर देखता हूं मैं कंस्ट्रक्टर इसका अवेलेबल है क्या. रनटाइम एक्सेप्शन अगर यूज करेंगे और थ्रोज क्लॉज निकाल देंगे, चेकआउट. देखो कोड हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइप ऑफ एक्सेप्शन हमने चेंज किया. एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हमने रनटाइम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया. अभी कंपाइलर कुछ एरर दे ही नहीं रहा है, because we are creating an instance of runtime exception. Runtime exception is unchecked exception. ये कंपाइलर कभी भी चेक नहीं करेगा कि आप हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. Okay, so any class which is inheriting runtime exception, any class which is inheriting runtime exception is going to be a unchecked exception. Any class which inherits exception or exception itself is going to be called a checked exception. चेकड मतलब क्या कि कंपाइलर चेक करेगा कि इसको आप हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे. ओके, आई एम रिपीटेड इट 2 times. Earlier when we are just entering into the exceptions, we studied that there are 2 type of exceptions: unchecked exception and checked exceptions. Unchecked exceptions are the exceptions which is not going to be checked by a compiler whether programmer is handling it or not. Checked exceptions are the exceptions where compiler check that exceptions are handled by a programmer or not. Okay. So runtime exception किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. So I am doing again undo कर रहा हूं मैं. I am writing here invalid amount exception. What is this? This is user defined exception. ये user defined exception है. जैसे null pointer exception आता है, array index out of bound exception आता है, number format exception आता है, वैसे ये exception है, हम खुद लिखने वाले हैं. Okay, so we are creating a class. Okay, like this. Okay, then we are creating a constructor and we are just saying super string. Otherwise, you how do you say that? You say here string
message. And here you can say message. कुछ नहीं ज्यादा करना है. If you want to write anything more, you can write more. लेकिन इतना काफी है. गया, जरा निकल गया. हमने खुद का क्लास लिखा, खुद का कंस्ट्रक्टर लिखा, तो देयर इज नो एरर नाउ. और ये चेक करो, ऑब्जेक्ट हम किसका डिक्लेयर कर रहे हैं? इनवैलिड एक्सेप्शन का. थ्रोज क्या लिख रहे हैं? इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन. दोनों मैचिंग कर रहे हैं, मैचिंग होना चाहिए. थ्रोज क्लॉज में जो भी लिस्ट हो रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ए टाइप यूज्ड टू रेज एक्सेप्शन. मतलब यहाँ जो हम ये कर रहे हैं, थ्रो ई इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ टाइप रन टाइम इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन. उसका टाइप इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन होना चाहिए. okay? क्या मैं एक्सेप्शन लिख सकता हूँ क्या? Yes, you can write, because जैसे salaried employee is always an employee, hourly paid employee is always an employee, commission based employee is always an employee. वैसे invalid amount exception is always an exception. क्योंकि invalid amount exception जो आपने क्लास नया लिखा है, ये क्लास एक्सेप्शन इनहेरिट करता है. एक्सेप्शन इनहेरिट करता है मतलब इस ई का टाइप एक्सेप्शन बी है. ओके, तो ये अलाउड है, कोई बात नहीं. लेकिन मैं स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूं. ठीक है. सो सिमिलरली हियर नाउ कॉपी कर सकते हैं इसका यहाँ का कोड. क्या करना पड़ेगा? You have to write throws clause. Throws. Just wait. I'll put it like this. Add throws declaration. मैं Eclipse की थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कोड लिखने की नौबत ना आ जाए. इससे आपको भी पता चलेगा कि हाउ टू यूज इक्लिप्स इफिशिएंटली. यहाँ क्या करें अभी? सो थ्रो न्यू insufficient balance exception. ठीक है. क्वेश्चन है किसी को कुछ? तो क्लास बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहा हूं इक्लिप्स की हेल्प लेके. सुपर मैसेज. Going back, and I'm adding throws clause. Just observe this. One exception can raise many number of exceptions. Not required. एक ही मेथड है, एक ही एक्सेप्शन रेज करने की जरूरत नहीं है. एक मेथड एक से ज्यादा एक्सेप्शन रेज कर सकती है. Okay? And that is listed in comma separated list. That is throws E1, comma E2, comma E3, comma E4, comma E5, comma whatever you can write that. Only thing is that has to be raised here. For example, यहाँ मैं अगर
my exception करता हूँ. Okay, if I am going to put here my exception, of course I can write class. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि माय एक्सेप्शन नाम का कोई एक्सेप्शन रेज हो ही नहीं रहा है. अननेसेसरी यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई हियर. अदरवाइज क्या होगा, ये जो मेथड एज एन एपीआई मैं किसी को दे दूंगा, पब्लिश करूंगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि इस एक्सेप्शन विड्रॉ मेथड इज गोइंग टू कॉज 3 टाइप ऑफ द एक्सेप्शंस. इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन एंड माय एक्सेप्शन. लेकिन माय एक्सेप्शन तो कुछ रेज हो ही नहीं रहा है, तो इट इज बेटर नॉट टू स्पेसिफाई. मत स्पेसिफाई करो. जो एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है उसको स्पेसिफाई मत करो. Okay, we are just removed base 2, and obviously this is also not required. So any question as far as the bank account class and exception, object creation, defining user defined exceptions like invalid amount exception, insufficient balance exception, and using it? Please speak. I'm not disturbing you. No. सर मतलब इम्पोर्टेंस क्या है जावा में? Yes, Apu, I'm not getting your voice. सर जावा में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जावा में हेलो अपू. जावा में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये पूछ रहे थे. अरे इम्पोर्टेंस ये है, जावा में नहीं है इसका इम्पोर्टेंस, इसका प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंस है. Because when you are writing code and if some code is not running properly as per our expectations, we are writing mechanism to check out that whether it is running properly or not, or whether data is coming properly or not. If not coming, we are raising an exception. इस एक्सेप्शन रेजिंग का एडवांटेज ये होगा अभी, ओके, जब मैं मेरा एक्सेप्शन टेस्ट बैंक अकाउंट वाला अकाउंट टेस्ट वाला क्लास अगर मैं रन करूंगा, देखो इधर अभी एरर आ रहा है, डिपॉजिट को एरर है, विड्रॉ को एरर है. व्हाई दिस एरर इज नाउ? क्योंकि अभी मेरे कंपाइलर को ये पता चला कि जो बैंक अकाउंट का क्लास है, बैंक अकाउंट का डिपॉजिट मेथड और विड्रॉ मेथड इज रेजिंग एक्सेप्शंस. कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि जब बैंक अकाउंट क्लास का डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड का हम डिक्लेरेशन देखेंगे तो डिक्लेरेशन में थ्रोज क्लॉज है, तो कंपाइलर को पता चलेगा कि ये मेथड एक्सेप्शन रेज करता है. कंपाइलर को पता चलेगा कि विड्रॉ मेथड 2 एक्सेप्शन रेज करता है. जब टेस्ट में आएगा तो यहाँ एक्सेप्शन रेज होने के चांसेस है. रिमेंबर, जरूरी नहीं कि हो जाए, एक्सेप्शन के चांसेस है, इसलिए थ्रोज क्लॉज है. तो कंपाइलर बोलेगा कि आपको हैंडल करना पड़ेगा. सो यू हैव टू यूज ट्राई एंड कैच. तो आपको ये ट्राई में लिखना पड़ेगा. ऑब्वियसली विल राइट फुल, क्योंकि डिपॉजिट मेथड को भी वही एक्सेप्शन रेज होने वाला है. So you write here catch invalid amount exception जो कि रेज हो रहा है, then e dot print stack trace. वैसे सेकंड एक्सेप्शन है insufficient स्पेलिंग मिस्टेक गलत था आपका बेटा. We are going to rectify it. Okay. How to rectify in Eclipse? Don't change manually. Go to the type. Doesn't matter where you are. Okay. Doesn't matter where you are.
You can be in a bank account. Just to go to the type, right click it, say refactor, rename. In sufficient balance. ऐसे हमें कुछ करना था. You might be observed that it has changed it in each and every place where it is required to change. यहाँ इसने भी मैंने ये चेंज करने के बाद ये भी चेंज हो गया, ये चेंज करने के बाद क्लास का नाम भी चेंज हो गया. अपने आप not required to do the manual. Otherwise क्या करना पड़ता मुझे? I required to do the changes into the 3 places. और normally हम जब classes देखेंगे तो we don't know that how many number of places we are doing that. It might be a many number of places, तो कुछ miss हो सकता है renaming में. So it is better to use refactoring concept that once you are going to change the name of any variable or any type, it is going to replicate it to each and every place where that particular name or variable is used. So coming back to the this one, insufficient balance exception. Then v dot fix status. बस अभी कुछ पूछना है रन करने के पहले? तो इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन रेज होगा तब इधर आएगा. जरूरत तो नहीं है सीस आउट की, लेकिन हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. रन इट. Invalid amount exception. Invalid amount negative expected positive value. जैसे पहले हमें एरर आते वैसे एरर है. कहाँ से हुआ? बैंक अकाउंट डॉट जावा लाइन नंबर 60 पे जो बैंक अकाउंट टेस्ट लाइन नंबर 23 से कॉल हुआ था. लाइन नंबर 23 से ये डिपॉजिट मेथड कॉल हुआ था विथ रॉन्ग अमाउंट, इनवैलिड अमाउंट. बैंक अकाउंट के लाइन नंबर 60 पे ये एरर रेज हुआ. So it is raised here. तो वैसे हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में पता चलेगा कि कौन से लाइन पे प्रॉब्लम आया, so that you can go to the specific line and you can rectify your code so that it is not going to have that particular problem. Obviously you require to backtrack. बैंक अकाउंट 60 ये मेथड ये कहाँ से कॉल हुआ था? बैंक अकाउंट टेस्ट से कॉल हुआ था. तो बैंक अकाउंट टेस्ट में गए, दैट मीन्स यहाँ जो 300 हम पास कर रहे थे वो गलत था. चेंज इट टू द प्लस 300. रन इट. देखो बैंक अकाउंट शुरू में 800 था, 300 ऐड किया, 1100 बैलेंस हो गया. लेकिन फिर विड्रॉ मेथड में हमने माइनस अमाउंट पास की तो फिर इनवैलिड अमाउंट आया. ये लाइन नंबर भी दे रहा है, लाइन नंबर 27 और बैंक अकाउंट टेस्ट. लाइन नंबर 7 क्या हो? बैंक अकाउंट डॉट जावा. ओके, so we are changing this to plus 400. Withdraw, run it. 800 रुपए पहले शुरू में था, 300 रुपए ऐड किया 1100 हो गया, 400 रुपए विड्रॉ किया 700 रुपए हो गया. लेकिन फिर हम और एक बार 1400 विड्रॉ करने की कोशिश करें, लेकिन अपने पास है कितना? 700 ही है. So again it is raising an exception, insufficient balance exception. आपको अभी जाके दिखाई देगा होगा कि पहले 2 टाइम इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन आया था, लेकिन अभी insufficient balance exception रेज हुआ क्योंकि वही हम रेज कर रहे हैं. बैंक अकाउंट डॉट जावा लाइन नंबर 74. हमें ये पता चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ और क्यों हुआ. और अभी ये कॉलर को पता चलेगा, मतलब कॉलर मतलब जो किसी और मेथड को कॉल करता है, जो मेथड एक्सेप्शन रेज करती है, उसको पता चलेगा कि जब वो मेथड एग्जीक्यूट हो रही थी जो कि कॉल हुई थी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओबी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया. तो इससे क्या होगा कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वी कैन राइट अ कोड टू रेक्टिफाई इट, और वी कैन गाइड द यूजर as per the errors. कि
आप ऐसा ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसा गलत है, सही तरीके से करो। वो फायदा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। यू कैन रिकवर फ्रॉम एन रन टाइम एक्सेप्शन। अदरवाइज आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है ना, इधर देखो, इधर क्रैश हो रहा है, मेन मेथड मेरा ये नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ sysout I think it is outside method. So not here. You want to write a bank account test. System.out end में अगर मैं ये रन करूंगा, एंड में कभी प्रिंट होगा क्या? होगा। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये कैच हमने लिखा है, इसलिए प्रिंट हो रहा है। अगर कैच हम नहीं लिखते तो प्रिंट कभी नहीं होता। And one more thing, there is one more clause called finally. So I am in finally is the block which is always going to execute. Doesn't matter whether exception occurs or doesn't occur. अगर होगा नहीं होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो आउटपुट आपका जो मिक्सिंग आ रहा है, मैंने आपको इसका जिक्र पहले भी किया था। Java had used the different mechanism to handle exceptions. तो एक्सेप्शन का जो प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड है, वो प्रिंट ट्रैक्स केसर का जो भी आउटपुट है वो अलग थ्रेड हैंडल करता है, और आपका मेन मेथड का system.out.println जो प्रिंट होता है वो अलग थ्रेड हैंडल करता है। और दो थ्रेड अगर एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है तो when CPU time is going to get depends upon that you are going to get an output. इसलिए ये मेन मेथड का am final and end man is mixing with exception handling, इसलिए मिक्स हो। This is something about user defined exceptions. I request you to read more about user defined exceptions, and if any queries, ask me in the next session. और अभी भी कुछ पूछना है तो आपको पूछ सकते हो, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ नहीं सकते। If you are having queries now, you can ask now. If you are not having, just go through the literature and find out that whatever we had covered, what others are saying about that, and any ambiguity or confusions are there, we can discuss about that. Obviously, I am not covered 100%. I covered just 70%. So any queries? As usual, no sir. No, Appu? sir. Huh? No, sir. No, sir. पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छा, जवाब बहुत अच्छी तरह से करना है, ये आपको जवाब देने वाला है। मतलब जवाब में जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डजंट मैटर, लेकिन इंटरव्यू में आपका जवाब ही जरूर होगा। ओके, शुड वी कंक्लूड आवर सेशन हियर? ध्रुव मीटिंग में हो? आजकल ध्रुव मीटिंग में नहीं होता है। जय भी नहीं है। Who is another here? क्योंकि आपको को बार बार नहीं बोल सकता मैं। मैं भेज देता हूँ। हेलो, हेलो,
मैं भेज देता हूँ सर. Okay, बेटा हर्ष, कोई बात नहीं. So I am ending this session here. वैसे तो मैंने डाउनलोड की अटेंडेंस लिस्ट, but still give me attendance so that I can mark it. Okay then, have a good day.